is the notation part very important. In the first two videos, we have seen the products of life insurance and how to find the present value, expected present value, and variance of present value when benefit is given at the end of year of death. Plus, in today's lecture, we are learning all those products now with benefit given immediately on death, right? So let's start with the whole life assurance. So we are finding the present value of benefit of 1 given immediately on death in a whole life assurance. So class life age X has taken the policy here. The moment life died, the benefit is given. So the benefit of 1 is given here, right? So class, what is the present value? The present value is what? V raised to power t, and this t belongs to any value from 0 to infinity, right? Now class, this can be written as present value v raised to power tx, where tx is my continuous random variable class. Fine. Now class, let's find the EPV of this. So what is my expected present value class? So it is expected value of v raised to power tx, right? Now class, tx is continuous random variable, so rather than summation, now we have integration. जिस भी चीज की एक्सपेक्टेशन लेते हैं क्लास वो एज इट इज इनटू द पीडीएफ ऑफ दिस, right? And this t can take value from 0 to infinity class, right? So class, what is my fxt? So it is 0 to infinity vt. This means what? tpx mu x plus t dt. So class, my expectation of present value is 0 to infinity vt tpx mu x plus t dt, right? And class, इसकी नोटेशन होती है a bar x. And what is a bar x means? कंटिन्यूअस नहीं है, इसका मतलब इमीडिएटली है. So this is expected present value of whole life assurance when benefit of 1 is given immediately on death. राइट क्लास? तो क्लास, इस फॉर्मूले को समझने के लिए आप ये भी देख सकते हैं. क्लास, एक्स पर पॉलिसी ली, एक्स प्लस टी पर जिंदा था, एक्स प्लस टी प्लस डेल्टा टी के बीच में लाइफ डाई हुई, राइट? तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वीटी. एक्स से लेकर एक्स प्लस टी के बीच में लाइफ था, तो इसीलिए हमारा फॉर्मूला क्या बना? टीपीएक्स. और क्लास, छोटे से टाइम इंटरवल में जब हम डेथ की बात करते हैं, आई टोल्ड यू वी यूज म्यू, तो दैट इज व्हाई इट इज म्यू एक्स प्लस टी डी टी, राइट? तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्लास, बिकॉज इन 22 एंड 23 चैप्टर विल डिराइव दिस फॉर्मूला. उसमें बहुत सारी सिचुएशंस आएंगी, तो इसका लॉजिकल इंटरप्रिटेशन भी आपको पता होना चाहिए. फाइन. तो क्लास, प्रेजेंट वैल्यू ये है, तो प्रेजेंट वैल्यू का स्क्वायर क्या होगा? इट इज वी रेज टू पावर 2tx प्लस प्रेजेंट वैल्यू स्क्वायर इज दिस. दैट मींस व्हाट इज माय ईपीवी स्क्वायर? इट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वी रेज टू पावर 2tx, right? So which is integration 0 to infinity v raised to power 2t into fxt dt, right? So it is integration 0 to infinity v dash t, जैसे हमने पहले किया था क्लास, right? Let v dash is equivalent to v square, which means I dash is equivalent to 1 plus I square minus 1, right class? So class, same वही notation, it is 2 a bar x, or you can say that a bar x at the rate I dash, right? Why I dash? This is 1 plus I square minus 1. फाइन. तो आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं. फाइन. तो क्लास, व्हाट इज माय वेरिएंस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू? सो इट इज 2 a बार x माइनस a बार x का स्क्वायर. फाइन. एनी प्रॉब्लम क्लास? क्लास, लेट्स सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a बार x. फाइन.
Any problem class? तो class let's see how to find the value of a bar x using the table. तो class हमें टेबल में जो वैल्यू दी हुई है वो ax की दी हुई है, हमें a bar x नहीं दिया हुआ, राइट? तो class इसके लिए अगर हम देखें, let's find out class what is a bar x? This is expected present value of benefit given immediately on death. तो class expected है throughout the year x to x plus. तो class इसके लिए अगर हम देखें, let's find out class what is a bar x? This is expected present value of benefit given immediately on death. तो class expected है throughout the year x to x plus 1. बच्चे वो कहीं पे भी डाई कर सकता है, राइट? तो हम बेनिफिट कहीं पे भी दे सकते हैं. तो उन्होंने एवरेज जो हम बेनिफिट देंगे वो एवरेज क्या होगा? मिडल ऑफ द ईयर, राइट? अब मिडल ऑफ द ईयर होगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी क्लास? कैन आई से अप्रोक्सीमेटली वी हाफ. तब जब वो फर्स्ट ईयर में क्या करेगा? डाई करेगा. फर्स्ट ईयर में डाई करने के चांसेस क्या है? 2x, राइट? और मींस व्हाट? प्लस ही में डाई बिटवीन x plus 1 to x plus 2. तो अगर x plus 1 और x plus 2 के बीच में डाई करेगा तो क्लास बेनिफिट ऑन एन एवरेज कहां मिलेगा? 1.5 पर. तो 1 रुपी यहां मिलेगा. प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? v 1.5, राइट? x और x plus 1 के बीच में जिंदा रहने के चांसेस क्या है? px. एंड डाई बिटवीन x plus 1 to x plus 2 इट इज qx plus 1, राइट? सिमिलरली क्लास x plus 2 to x plus 3 की बात करें तो v raised to power 2.5 2px एंड qx plus 2 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, राइट? तो क्लास जब हमने ax की बात की थी तो इट इज v qx plus v px v square px qx plus 1 plus v cube 2px qx plus 2 and so on, राइट? अब क्लास यहां पर v स्क्वायर की जगह मतलब v की जगह v हाफ है, v स्क्वायर की जगह v 1.5 है एंड सो ऑन. हाफ हाफ की कमी है तो क्लास हम v हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं. तो 1 by v रेज टू पावर हाफ से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया तो क्लास हमें कुछ ये रिजल्ट मिल जाएगा, राइट? तो क्लास ये दोनों चीजें सेम हो गई आपकी, सेम हो गई हैं. तो कैन आई से माय a bar x कैन बी रिटन एज 1 plus i रेज टू पावर हाफ ax. लिख सकता हूं नहीं लिख सकता क्लास? तो क्लास दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1 plus i रेज टू पावर हाफ ax. सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द वैल्यू यूजिंग द टेबल. दूसरा वे क्लास, there is another way. If force of mortality and force of interest is constant, हमें म्यू एक्स प्लस टी कॉन्स्टेंट दिया है क्लास म्यू, राइट? एंड क्लास हमें डेल्टा टी इज कॉन्स्टेंट इक्वल टू डेल्टा, ये गिवन है. तो क्लास ए बार एक्स कैसे निकालेंगे? तो क्लास इट इज 0 to infinity वी टी टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी गिवन है, राइट? तो क्लास डेल्टा टी अगर कांस्टेंट है तो वी कैन राइट इट इज e टू पावर माइनस डेल्टा टी. टीपीएक्स कैन बी रिटन एज e टू पावर माइनस म्यू dt, राइट? वी कैन टेक आउट म्यू कांस्टेंट बाहर. इंटीग्रेशन 0 to infinity e टू पावर डेल्टा प्लस म्यू टी dt. तो क्लास इंटीग्रेट कर लीजिए. इट इज e टू पावर माइनस डेल्टा प्लस म्यू टी होल डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा प्लस म्यू 0 to infinity, right? When you put infinity class, this is 0 and minus minus plus 1 by delta plus. So in short class it is mu by delta plus mu. तो क्लास अनदर इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपको पता होनी चाहिए. तो क्लास दो ही तरीके से हमें ए बार एक्स निकालने के लिए आएगा. ईदर फ्रॉम द टेबल वी यूज दिस फॉर्मूला और इफ फोर्स ऑफ मोर्टालिटी एंड डेल्टा टी आर कांस्टेंट. तो आपको दोनों मेथड पता होना चाहिए. फाइन. अनदर क्लास इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अगर हमें 2 ए बार एक्स की वैल्यू निकालनी हो टेबल से तो क्लास इफ यू रिमेंबर वहां पर हमारा v की जगह v डैश था तो हमें 1 by v डैश से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा. इट इज 2ax. So we get class what? 1 plus I dash raised to power half 2ax. And class 1 plus I dash is equivalent to 1 plus I का square, right? So class we get 1 plus I square whole raised to power half 2ax, which is 1 plus I into 2ax. Fine. So in this way we can find the value of 2ax from the 2a bar x from the table class. So another important result which you must remember class. Fine. Class I request you to please pause the video and try to solve this question.
And class, then we will discuss. You must remember class. सेम हो गई हैं तो कैन आई से राइट। तो क्लास ये दोनों चीजें सेम हो गई हैं आपकी, सेम हो गई हैं तो कैन आई से माई ए बार एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस आई रेस टू पावर हाफ ए एक्स। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता क्लास? तो क्लास this is approximately 1 plus I raised to power half ax. So in this way we can find the value using the
Another important result which you must remember, class. Fine. Class, I request you to please pause the video and try to solve this question. And class, then we will discuss. Fine. So class, let's solve this question. We have given a life age 35 purchases a whole life assurance